लेकिन डॉक्टर साहब को आज लेने प्रोग्राम में आने की दावत इसलिए दी क्योंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल नफरत का एक सिलसिला जो है अब वो डॉक्टर्स तक पहुंच गया है और वो बड़ा गलत मैसेज है। हमने आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाई हैं कि व्हाइट हाउस के सामने क्या हुआ, एम्बेसडर के घर के सामने क्या हुआ, पाकिस्तानी एम्बेसी जो वाशिंगटन डीसी में है उसके सामने क्या हुआ। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ नारे लगाए गए और उसमें बड़ों के अलावा बच्चे भी मौजूद थे और जो वो मैसेज दे रहे थे कि अगर वो पाकिस्तान से सिर्फ नफरत का मैसेज दे रहे थे और आज भी वो नफरत का बाजार जो है कहां पर खत्म होता है हमें नहीं पता। डॉक्टर साहब को से पूछेंगे, डॉक्टर साहब अमेरिका में रहते हुए आपको पॉलिटिक्स के हदूद क्या हैं? अगर आप यहाँ से बैठ के स्पेसिस पे बैठ के, फोन पे बैठ के लोगों को जमा कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि जी वो जाएं वहां पे हमला करें या यहाँ पे जाएं और नारेबाजी का सिलसिला सिर्फ नारेबाजी तक रहे, लेकिन अगर आप किसी को सजाए मौत देने की मुतालबा कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं मैं चाहता हूं कि अमेरिकन लॉज के मुताबिक जो है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो जो बेवकूफ हैं लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो सकता है अमेरिका के अंदर और क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, तो प्लीज काइंडली थैंक यू। जी, काफी वसी आपने सवाल पूछा है, बहुत, लेकिन आई विल ट्राई टू present as concise as possible. So there are two issues. One issue is the boundaries of social activism, what is permissible and what is not. In plain language, आपने बड़ा मशहूर शेर है, सब सुनते भी रहे हैं, वो है कि दिल के फफोले चल उठे सीने के ताक से। तो मैं एहसास करता हूं अपने उन पीटीआई के दोस्तों का कि जिनके ख्वाब टूटे हैं, जिनको कुछ तवक्कुआत थी वो उस तरह से शायद नहीं पूरी हुई, लेकिन उस हद तक तो हम उनकी साथ हैं, उनके जो मुतालबा है इलेक्शंस का ये उस तरह। लेकिन उसका जो दूसरा मिसरा है ना कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, तो सही है, लेकिन अगर घर के चिराग से आग लग जाए वो नहीं। And that is the same principle that is enshrined in American Constitution and the history of America. Right from the early stages, President Ulysses Grant, who was the victor in the war against the South, he implemented against the Ku Klux Klan, America's First Amendment, the most protected and sacred freedom to speech, has been defined also with certain restrictions. So the Act of 1871 was passed by overwhelming majority, and he signed it into the law, and that empowered the President of the United States of America to suspend the writ of habeas corpus, which is one of the most important, habse beja. So that was suspended, and the KKK was deemed a terrorist group because they were inciting hate. Since then, KKK history has been, and I'm familiar with that because the most current leader, David Dukes, lived about 12 miles from my house, and I had a face-to-face encounters with them. At one time, so one of his followers tried to challenge me and said, "This, you should know, this is David Duke's country." And I told him, I said, "This is not historically true. This was David Duke's country. Since I'm here, we have to figure out a way to live together." And we would do that. So the same way is that in a democracy, you have to have space for dissent, but the dissent should be expressed in a productive, positive manner. ताली दोनों हाथों से बजती है, डायलॉग दो लोगों से होता है, लेकिन थप्पड़ एक हाथ से पड़ता है। और अगर किसी को आप थप्पड़ मारे, तो जीसस ने भी ये कहा ना कि थप्पड़ एक हाथ से मारे दाएं गाल पे तो बायां गाल आगे कर दो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि अगर कोई बाएं गाल पे भी थप्पड़ मारे तो फिर उसके साथ क्या करो। He was wise enough to leave it up to the person. So I think अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि आपने 1 साल से ज्यादा मीर जाफर, मीर सादिक कहा, डर्टी हैरी कहा लोगों को, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल हम उसके बिल्कुल हक में थे। इवन दो यहाँ भी अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाए तो उसको कंडेम किया जाता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने जब जॉन मैकेन के बारे में इस तरह के लफ्ज बोले थे
So everybody condemned him. Okay, he said, I have no respect for one who became a prisoner of war. Okay, he was a war hero, and Donald Trump was severely condemned. So the same way, फौज में कि हम सियासत में मुदाखलत की हमेशा मुखालफत करते आए हैं, लेकिन फौज की मुखालफत की. There's a distinction. मेरा बेटा अगर कोई कानून तोड़ता है घर का, तो मैं उसको सजा दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अपनी उससे नहीं कर सकता इनकार के उसके रिश्ता क्या है. वो मोहब्बत का रिश्ता तोड़े बगैर आप इस्लाह की कोशिश कर सकते हैं, और वो बाउंड्री है. तो सेम वे इन अमेरिका since 1871 this law keep coming under various forms before the Supreme Court, and in 1992 the Supreme Court tried to struck down a speech that was applied to a youth who burned a cross on the lawn of a state building. And originally it was considered as a protection against the free speech. However, in very famous case, in 2003 case, I think if I remember correctly, then the Enforcement Act, and in that one, the Supreme Court clearly established that hate speech that incites violence is not protected under the First Amendment. So they consider the burning of a cross on a state ground, if it was burned in a proper venue where they were protesting, and during that protest march or something they did that, so then it was okay. But they said imminent lawlessness should not be and cannot be okay. So therefore, in I think Virginia versus Black 2000 case, they ruled that First Amendment does not prohibit the law that penalized individuals who burnt the cross with the intent of intimidating others. So when you start to use the force in that way to intimidate others, that is an absolute line that should not be crossed. Now that's one part. The second part is when you are a naturalized citizen or even a born citizen, we all heard the general indictment for General Flynn. General Flynn was famously known for having, inciting the crowd to raise slogan, lock her up against Hillary Clinton. That was considered okay. And he was the National Security Advisor, which is a very powerful position in America. However, when he tried to be a foreign agent, he was charged under violation of FARA, Foreign Agent Registration Act. So I would advise my fellow Pakistani Americans that please, when you are engaging in any social activism, please do read FARA or speak to a lawyer who can explain to you. You can verify it through Google. The explanation by the Office of Inspector General of FARA is that even a company that is engaged, an American company that is engaged by a French entity, and they run an ad which says that champagne is the only that comes from France, since it is a message that meant to change the perception of the American public, whether paid or unpaid, that can be prosecuted. And we have examples, unfortunately. Very painful example for me was the prosecution of Dr. Nisar. The man gave his life for activism to support causes in Pakistan, and the indictment and everything else from the Department of Justice is online. What was his fault? They said that just the fact that he can be sitting in a think tank without disclosing that he is on the behalf of the Pakistan. So right now people are openly advancing a partisan narrative under the guise of human rights, and that comes very dangerously close to having problems within the American law. So I would advise them to please check with their lawyer, because this is a country of laws.
जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल लेते जाएं कि जो हमारे लोग जाके मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठते हैं, उनकी वीडियोस आती हैं कि जी वो पीटीआई की या मुस्लिम लीग की या पीपीपी की मीटिंग्स में बैठते हैं और उनके साथ फिर प्रोटेस्ट में बैठ के नारे लगा रहे होते हैं, तकरीरें स्पीचेस कर रहे होते हैं, तो वो तमाम भी फारा के एजेंट ही कहलाएंगे क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? You can do that if you are registered. See, there's ओ, a तो yes. इसका मतलब है कि आपने अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो जी, जी. आपको ट्रबल हो सकती है। Exactly. आपको जब registration का एक process है, there are two ways of FARA registration. Any lawyer can help you. You can do it yourself. You can register through the Department of Justice, or I think the State Department. I don't remember exactly. Or you can register through Congress. So both have their process. So you should, without doing that, whether you are as long as the moment you represent the point of view of foreign entity, political entity or business entity before the American public, then you are in violation if you're not a registered agent. अच्छा